The students, how are you all? Today we are going to discuss chapter 7, Interdependence of Plants and Animals. Here is some warm-up. Put these animals in a sequence as they make a simple food chain. You can give numbers 1 to 5. So you can do it by yourself. Let's know about environment and its component, dependence of plants on animals, food chain and food web, maintaining balance in nature, steps to restore natural balance. Interdependence of plants and animals, dependence of animals on plants, producers, consumers and decomposers, causes for natural imbalance. Environment and its components. The things that surround us such as air, water, land, sky, plants, animals, etc., which in turn affect our lives, is called our environment. Everything that surrounds and affects the life of an organism is called its environment. The environment consists of two factors. So students, जो आपका environment है वो क्या है? जो आपके आसपास की चीजें हैं और जो आपको affect करती हैं, that's your environment. और वो कोई भी प्लांट हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कुछ भी हो जो उनकी लाइफ को अफेक्ट करते हैं और वो उनके आसपास की चीजें हैं, वो क्या होता है? वो उनका एनवायरनमेंट होता है. आपके एनवायरनमेंट के दो फैक्टर होते हैं. लेट्स रीड अबाउट इट. हियर इज अबायोटिक फैक्टर्स. दीज आर द नॉन लिविंग थिंग्स दैट कॉन्स्टिट्यूट द एनवायरनमेंट सच एज एयर, वाटर, सॉइल, वार्मथ, सनशाइन, मिनरल, एक्सेट्रा. सो बच्चे स्टूडेंट्स, फर्स्ट फैक्टर इज अबायोटिक फैक्टर्स. सो वो क्या होते हैं? जो आपकी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे एयर, वाटर, सॉइल, एक्सेट्रा. लुक एट दिस पिक्चर. दीज आर अबायोटिक फैक्टर्स. सेकंड, बायोटिक फैक्टर्स. These are the living things that affect us such as plants and animals, including microorganisms such as bacteria and fungi, etc. So students, आपके बायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं? आपकी लिविंग थिंग्स होती हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोऑर्गेनिजम्स, एक्सेट्रा. All these biotic and abiotic components interact and depend upon each other for their existence. So students, जो आपका बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं उनकी एग्जिस्टेंस के लिए. Here is interdependence of plants and animals. Both plants and animals have been living together from the very early phase of evolution to form the biotic component of the environment. The various factors for which they depend on each other include nutrition, reproduction, protection, shelter, etc. This interdependence can be seen very well in a forest ecosystem, where both plants and animals coexist with the support of each other. Plants provide food, shelter to the animals, which, on the other hand, help the plants in process like seed dispersal and pollination, etc. So students, आपको अगर हम बात करें, interdependence means वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं. सो प्लांट्स और एनिमल्स क्या है? एक दूसरे के साथ बहुत अर्ली फेज ऑफ इवोल्यूशन से रहते हैं और आपके एनवायरनमेंट के बायोटिक कंपोनेंट है. वो एक दूसरे की हर एक चीज में हेल्प करते हैं, जैसे रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, प्रोटेक्शन, शेल्टर. जैसे आपके प्लांट्स जो है वो फूड प्रोवाइड कराते हैं, शेल्टर प्रोवाइड कराते हैं आपके एनिमल्स को. ठीक है, आपके जो एनिमल्स हैं वो प्लांट की पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, सीड डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं. सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स जो वो एक दूसरे के लिए करते हैं और एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है. लेट्स रीड अबाउट दिस इन डिटेल. डिपेंडेंस ऑफ प्लांट ऑन एनिमल्स. Plants are mostly dependent on animals for following reasons. Look here. Carbon dioxide. Green plants require carbon dioxide to prepare their food by a process called photosynthesis. Carbon dioxide is released by animals during the process of respiration, where they breathe in oxygen and release carbon dioxide in order to get the energy for various life activities. The first point is carbon dioxide. So carbon dioxide animal release करते हैं अपनी respiration के थ्रू और उसकी नीड आपके प्लांट्स को होती है अपना खाना प्रिपेयर करने के लिए in the process of photosynthesis. Pollination and reproduction. In plants, for reproduction, pollen grains have to be transferred from the male part of a plant to the female part of the plant, which results in fertilization and formation of seed. The seed in turn give rise to a new plant.
सो स्टूडेंट्स, आपके जो एनिमल है वो प्लांट्स के पोलिनेशन में भी हेल्प करते हैं, दैट इज रिप्रोडक्शन। वो उनके पॉलन ग्रेन्स को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, कैसे, उनके मेल पार्ट से फीमेल पार्ट पे, और उससे क्या होता है, आपका नया प्लांट जो है वो ग्रो करता है। नाउ सीड डिस्पर्जल। Seed dispersal is the movement of seeds away from the parent plant. Since plants cannot move from one place to another, they depend on animals and various other agents, which help them disperse their seeds. Seed dispersal is important because if all seeds fall at one place, there will be competition for space, nutrients, etc., and they will not be able to grow. सो स्टूडेंट, जो आपका सीड डिस्पर्जल जो अभी हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस भी किया है, तो सीड डिस्पर्जल भी किसकी हेल्प से होता है, एनिमल की हेल्प से होता है। और अगर सीड डिस्पर्जल नहीं होगा तो आपके जो प्लांट्स है वो एक ही स्पेस पे ग्रो करेंगे, वहां पर क्या हो जाएगा बच्चे, कंपटीशन हो जाएगा और अच्छे से आपके प्लांट्स जो है ग्रो नहीं कर पाएंगे। Here, decomposition of dead plants and plant parts. When a plant or a plant part dies, it falls to the ground. These are then acted upon by microorganisms and decomposed to form humus, which in turn mixes with the soil, thus increasing the fertility of the soil. जब आपके प्लांट्स के किसी पार्ट क्या हो जाता है, डेड हो जाता है, या कोई प्लांट डेड हो जाता है, तो उसको आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करते हैं और उससे क्या हो जाता है, वो सॉइल में मिक्स हो जाता है और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। डिपेंडेंस ऑफ एनिमल्स ऑन प्लांट्स। Animals are also dependent on plant for various reasons. Some of them are listed below. अब आपके एनिमल्स आपके प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। अब उसके हम कुछ आपके रीजंस रीड करेंगे। Here is oxygen. Animals are dependent on plants for oxygen, which is produced by the plants as a result of photosynthesis. Oxygen is used by animals for breathing, without which they cannot survive. सो स्टूडेंट्स, जो ऑक्सीजन है वो हमें कहां से मिलती है, प्लांट से मिलती है, एज यू नो दैट। फूड। प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म। इट इज सो बिकॉज plants are the only living things that can make their own food with the help of carbon dioxide, water, sunlight by a process called photosynthesis. So students, एनिमल्स को फूड किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर एक एनिमल किस पे डिपेंड करता है बच्चे, प्लांट्स पे डिपेंड करता है। वो इसलिए क्योंकि प्लांट एक सिंगल ओनली लिविंग थिंग है जो क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। हियर इज शेल्टर। प्लांट्स प्रोवाइड शेल्टर टू मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एक्सेट्रा। सो स्टूडेंट्स, प्लांट्स एनिमल्स को शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं। डू यू नो the Amazon rainforests are known as the lungs of our planet as it continuously recycles carbon dioxide into oxygen. It is estimated that 20% of the world's oxygen is produced in the Amazon rainforest. So आपके जो Amazon rainforest है वहां वर्ल्ड की 20% ऑक्सीजन क्या होती है बच्चा, प्रोड्यूस्ड होती है। It is believed that about 80% of world's diet originated in the Amazon rainforest, which includes fruits like orange, grapefruit, coconut, guavas, pineapples, mangoes, etc., and vegetables such as potatoes, corns, yams, etc., grains such as rice, and spices such as pepper, turmeric, cinnamon, cloves, etc. Many of prescriptions drugs sold worldwide are derived from plant sources. About 25% of the ingredients of the Western pharmaceuticals are derived from rainforest. So students, आपके rainforest जो है वो आपके 80% फूड आइटम्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं Amazon rainforest। और Amazon rainforest में से कुछ प्लांट्स को हम किस में यूज करते हैं, अपनी दवाइयों में यूज करते हैं। Now, food chain and food web. In an ecosystem, plants and animals are dependent on each other for survival. This interdependence can be very well described with the help of food chain or food web. The organism in an ecosystem need energy, and there should be flow of energy within an ecosystem. The sun is the ultimate source of energy. This energy is used by green plants to prepare food. They are therefore called producers. These plants are eaten by herbivores. These are therefore called primary consumers. Herbivore
in turn are eaten by carnivores, they are called the secondary consumers. The carnivore, when dies, lies on the ground and decomposes, then act upon it and mixes it with the soil. So आपकी फूड चेन स्टूडेंट क्या होती है? जब आपकी एनिमल्स प्लांट्स को हम एक वे में अरेंज करते हैं, कौन किसको कंज्यूम करता है, कौन प्रोड्यूस करता है. ओके, तो जब हम प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं तो हमारे प्रोड्यूसर्स ऑलवेज प्लांट्स होते हैं, क्योंकि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं. ठीक है, और जो एनर्जी उन्हें मिलती है वो कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है. तो अगर हम अरेंज करते हैं तो सन क्या है? आपका सोर्स है एनर्जी का. देन प्रोड्यूसर्स आते हैं, दैट इज योर प्लांट्स. उसके बाद हम हर्बीवोर्स एनिमल्स की बात करते हैं. हर्बीवोर्स क्या करते हैं? जो प्लांट्स को खाते हैं. सो देन आफ्टर दैट आपके कार्निवोर्स, क्योंकि कार्निवोर्स किसको खाते हैं? हर्बीवोर्स को. उनको हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स बोलते हैं. और जब आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स मर जाते हैं तो उनको डिकम्पोज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म. Food chain is the transfer of energy in the form of food from one organism to another in an environment, starting with the green plants or producers and ending in decomposition. So बच्चे, so students, food chain क्या है? आपकी एक चेन है जो स्टार्ट कहाँ से करती है? आपके प्रोड्यूसर से, और एंड कहाँ होती है? डिकम्पोजर्स पे. लुक एट दिस पिक्चर. हियर इज अ फूड चेन. हियर इज सन, देन प्लांट, then deer, then lion. So it is a complete food chain. Here is components of a food chain. Producers. Green plants are called producers. They are called because they are the only living things that can produce their own food using sunlight, carbon dioxide, water and minerals, and with the help of green pigment called chlorophyll present in them. The light energy from the sun is converted into chemical energy and is stored in the plants, so the plants make the first level in food chain. So आपकी फूड चेन में फर्स्ट जो है लेवल होता है, दैट इज प्रोड्यूसर्स. और ग्रीन प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं. क्यों? क्योंकि वो आपके ओनली लिविंग थिंग है जो अपना खाना खुद से बनाते हैं. ये आप सबको पता है. और कैसे वो बनाते हैं? आपके जो प्लांट्स हैं वो सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल की हेल्प से अपना खाना प्रिपेयर करते हैं. कंज्यूमर्स. प्लांट्स आर ईटन बाय हर्बीवोर्स. एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. देयरफॉर all animals depend on plants directly or indirectly for their food, and thus energy from plants is transferred to them. Thus herbivore make the second level in a food chain. They are therefore called the primary consumers. These primary consumers are in turn eaten by carnivores. They are called secondary consumers and form the third level in a food chain. At times, this secondary consumer is eaten by another carnivore of higher order. This is called tertiary consumer. Thus, there is a transfer of energy from the primary consumers to the secondary and then to tertiary consumers. So, student, आपकी food chain में हमारे जो consumers होते हैं वो 3 stage पे होते हैं. Primary consumer, that is herbivores. Then carnivores, they are secondary consumer. In tertiary level, there is higher carnivores who eat other animals, and that's how there is a level of food chain. Here is decomposers. When the consumers die, their bodies are acted upon by microorganisms, broken into small particles and are mixed with the soil. The energy of the producers and consumers are used up by the decomposers and is supplied back to the soil, thus keeping the environment clean. So students, जो आपके decomposers होते हैं वो आपके consumers को decompose करते हैं after their death. Food web is the interaction of various food chains. When various food chains are interconnected to each other at different levels, a food web is formed. It shows the interconnection between different organisms in an ecosystem. The following diagram will help us to understand the food web better. Look at this picture. So students, food web होता क्या है? जब आपकी बहुत सारी food chains interconnected होती हैं, और जब वो interconnected होती है उनका जो connection complete एक बन जाता है, that is food web. Look at this picture. Here is some green plants first, then grasshopper, then frog. Look at this picture. Here is more than 2 or 3 food chains exist, and this type of interaction of food chains is called food web. Now we have check and mate. You can do it by yourself, as we already read about these things. Maintaining balance in nature.
Balance in nature means the balance between living organisms such as human beings, plants, and animals and their environment. Harmonious relationship among all these leads to a perfect ecological balance. For this, there should be sufficient food available for all living beings. Insufficient food leads to starvation and death of an organism. A species can survive only when favorable ecosystem is created where they can live and multiply. So students, आपका बैलेंस कब होगा? जब आपके प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के बीच एक प्रॉपर बैलेंस होगा, एक इकोलॉजिकल बैलेंस होगा. आपका फूड जो है वो प्रॉपर अमाउंट में आपके यहाँ प्रेजेंट होगा. अगर इनसफिशिएंट फूड होगा तो डेथ हो जाएगी. और कोई भी स्पीसीज कब सरवाइव करती है? जब उसका फेवरेबल इकोसिस्टम हो और वो वहां सरवाइव भी करती है और मल्टीप्लाई, दैट मीन्स प्रोड्यूस करती है, या हम बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन वहां हो जाता है. What happens to the plants and animals when one type of animal lives or dies out? Animals that depend on the missing plant or animal for food will be without food. This may die or leave the area in search of other food and shelter sources. For example, if snakes are killed and eliminated from the rice fields, there will be an increase in the rat population which will eventually destroy the crops, thus disturbing the natural balance. सो स्टूडेंट, सपोज अगर आपके किसी एक एनिमल या प्लांट की क्या हो जाए, डेथ हो जाए या वो खत्म हो जाए, तो क्या होगा? तो स्टूडेंट्स, जो एनिमल या प्लांट उस पर डिपेंड करता है वो भी क्या होगा? विदाउट फूड या तो वो डाई हो जाएगा या फिर अपने एरिया को छोड़ के किसी और एरिया में खाने की सर्च के लिए बाहर जाएगा. ठीक है. अब क्या होता है, सपोज आपके जो राइस फील्ड्स होते हैं उनमें स्नेक्स बहुत ज्यादा मिलते हैं. अगर वहां से स्नेक्स को एलिमिनेट कर दिया जाए तो वहां पर रेट की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी. और अगर रेट की पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो वो भी किसको डिस्टर्ब करेगा? किसको डिस्ट्रॉय करेगा? आपकी क्रॉप को डिस्ट्रॉय करेगा. और इससे क्या हुआ कि आपका नेचुरल बैलेंस क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया. ऑस्ट्रेलिया हैज द लार्जेस्ट कोरल रीफ इन द वर्ल्ड. इट इज नोन एज द ग्रेट बैरियर रीफ. Over the past 30 years, there has been huge loss in coral of this reef. One of the main reasons for this was due to the crown of the thorns starfish caught. These deadly starfish can eat 53 square meters of live coral naturally. This starfish has 21 arms and is discovered with venomous spine-like spikes. Australian marine scientists have found out this problem can be solved with the help of marine species of a snail called Ghent trion, which is the only natural predator of the starfish. It is one of the largest sea snails, reaching lengths of up to 2 feet. It is said to be very active and is known as to aggressively chase its prey, which it defects through smell and kills it. The Australian government giving legal protection to the Ghent trion species and is trying to help it reproduce artificially so that it can reduce the population of crown of thorns starfish and save the coral reef from destruction. Look at this picture. Again, trion feeding on a crown of thorns starfish. So student, क्या है जो आपका ग्रेट कोरल रीफ है वर्ल्ड में, वो कहाँ है? आपके ऑस्ट्रेलिया में है. लेकिन वो डिस्ट्रॉय हो रहा था. क्यों हो रहा था? रीफ जो आपके कोरल होते हैं वो एक तरीके से आपका एक्वेटिक जो है ऑर्गेनिज्म होता है. सो आपकी जो स्टारफिश होती है, क्राउन ऑफ थॉर्न्स स्टारफिश, वो उसको खा जाती है. धीरे धीरे वो डिस्ट्रॉय हो रहा था. अब जो आपके ऑस्ट्रेलियन मेरीन साइंटिस्ट हैं उन्होंने फाइंड किया कि जो आपका गेंट ट्रायन जो है स्नेल जो होती है वो आपके स्टारफिश को खा लेती है. तो अब उन्होंने क्या किया? उनको प्रोटेक्शन दिया, उनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज किया ताकि वो कोराल के डिस्ट्रक्शन को सेव कर सके. Causes of natural imbalance. The causes of imbalance in an environment may be a disturbance either caused naturally or created by humans. A disturbance is any change that causes a disruption in the balance of an ecosystem. So students, आपका imbalance कब create होगा? या तो वो naturally हो जाता है या फिर ह्यूमंस के द्वारा क्रिएट किया जाता है. और वो जो डिस्टर्बेंस आपके इकोसिस्टम को अफेक्ट करता है, दैट इज इम्बैलेंस. अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन कॉज डिस्टर्बेंसेस आर deforestation. Due to ever increasing human needs, large stretches of forest are cleared, which results in habitat destruction of many animal species
apart from depriving all living beings from numerous forest resources. ह्यूमन नीड्स जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है, हम फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, आपके जो एनिमल्स हैं उनका हैबिटेट आप डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे लिविंग बींग्स जो है, कुछ जो एनिमल्स हैं वो खत्म हो रहे हैं, और ये चीज बहुत आपके फॉरेस्ट रिसोर्सेज भी कम हो रहे हैं. पॉल्यूशन, setting of industries, uncontrolled uses of vehicles, dumping of garbage into water bodies, etc. have resulted in various forms of pollution in the environment. So students, जो आपकी इंडस्ट्रीज है वो बहुत सारे टाइप का पोल्यूशन क्रिएट करती हैं, जैसे कि वो आपकी वाटर बॉडीज में किसी गार्बेज को थ्रू करते हैं या कोई लिक्विड टाइप में कुछ होता है, सो दैट इज मेक एनवायरमेंट अनहेल्दी. Introduction of a new species. Sometimes if a new species of plant or animal is brought into a new place, it affects the other native species growing there. और अगर कभी हम किसी न्यू स्पीसीज को स्टूडेंट्स किसी नई जगह पर ग्रो कराते हैं तो उसके आसपास की स्पीसीज को अफेक्ट करती है. ओवर हंटिंग ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज. When there is unlawful hunting of particular species, it comes to the verge of extinction. सो स्टूडेंट्स, जब आप किसी भी स्पीसीज की लाइक किसी भी एनिमल की ओवर हंटिंग की जाती है तो वो एक्सटिंक्ट होने की कगार पर आ जाते हैं. अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल डिस्टर्बेंसेस आर वोल्केनिक eruptions. In the event of volcanic eruption, large amount of lava spreads across huge areas with a very large quantities of smoke and chemical release. This adversely affect the natural environment. So student, first is that volcanic eruption. जब आपका volcanic eruption होता है तो बहुत सारा लावा आपकी लार्ज अमाउंट में जो है कहाँ स्प्रेड हो जाता है, आसपास के एरियाज में. बहुत धुआं होता है, बहुत सारे केमिकल आपके रिलीज होते हैं, और ये आपके नेचुरल एनवायरनमेंट को बहुत बुरी तरह अफेक्ट करता है. फ्लड्स कॉज ह्यूज डिस्ट्रक्शन टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. Large numbers of human life, property, crops, livestock, etc. are harmed during floods. This may reduce biodiversity in an environment. जब भी आपकी बाढ़ आती है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, वो प्रॉपर्टी का हो, ह्यूमन लाइफ का हो, या फिर आपके एनिमल्स का हो, और इससे आपके एनवायरनमेंट में बायोडाइवर्सिटी रिड्यूस होती है. फॉरेस्ट फायर्स. Forest fires cause great damage to trees and wild animals. Fires destroys the nest, natural habitats and food sources of the animals living there, apart from killing a huge number of wildlife. जब भी आपके जंगलों में आग लगती है, आपके एनिमल्स को बहुत बुरी तरह अफेक्ट करती है. उनके रहने की जगह खत्म हो जाती है, उनका खाने के जो सोर्सेस हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और बहुत ज्यादा एनिमल्स जो हैं आग में मर जाते हैं. सो इट इज अ वेरी डेंजरस थिंग फॉर आवर एनवायरनमेंट. स्टेप्स टू रिस्टोर नेचुरल बैलेंस. In order to restore the balance of nature, certain steps have to be taken. Some of them are: afforestation. Large scale planting of trees on barren lands is called afforestation. Afforestation provides a fresh supply of timber, food, fodder for cattle, shelter, etc. In addition to bringing greens to the region and cleaning the air, it also prevents soil erosion. So students, afforestation means आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स जो है लगाने चाहिए. उससे क्या होगा, आपकी जो है आपको वुड मिलेगी, आपको फ्रेश टिम्बर मिलेगी, फूड मिल जाएगा, और आपके जो एनिमल्स हैं उनको शेल्टर मिल जाएगा. तो दीज आर द थिंग्स, और वो आपके सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करता है. सो आपको बहुत ज्यादा प्लांट्स जो है लगाने चाहिए. प्रिवेंट पॉल्यूशन. Steps should be taken to prevent factories and vehicles from emitting harmful chemicals. Catalytic converters should be installed in vehicles to convert poisonous gas into non-poisonous gas. Sewage from industries should be treated before releasing into the environment. Protected areas should be created by the government for protection of plant and animal species such as wildlife sanctuaries and national parks. So आप
पोल्यूशन को प्रिवेंट कर सकते हैं कि जो हमारी फैक्ट्रीज या व्हीकल्स हैं जो हार्मफुल केमिकल्स को एमिट करते हैं, हम उनमें कुछ कैटालाइटिक कन्वर्टर्स लगा सकते हैं जो आपकी पॉइजनियस गैस को नॉन पॉइजनियस गैस में चेंज कर देते हैं। इंडस्ट्री से जो सीवेज है वो आपकी रिवर्स में आती है, उस चीज को हमें अवॉइड करना चाहिए, उससे आप पोल्यूशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, हमारी जो गवर्नमेंट है वो प्रोटेक्शन देती है प्लांट और एनिमल स्पीसीज को with the help of wildlife sanctuaries and national parks. Do you know important facts about wildlife protection? The Sundarban area in West Bengal is famous for Royal Bengal tiger. So जो सुंदरबन एरिया है वेस्ट बंगाल में वो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। The lions is found naturally in Gir forest in Gujarat. In 1972, the Gir Lion project was launched for its protection. So जो आपके लायन है वो कहाँ मिलते हैं? गिर फॉरेस्ट गुजरात में मिलते हैं और उनके प्रोटेक्शन के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए गए हैं। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल वाज लॉन्च्ड इन 1975 टू प्रोटेक्ट बोथ घड़ियाल एंड एलिगेटर स्पीसीज ऑफ द क्रोकोडाइल एट प्लेसेस लाइक कुकरेल रिजर्व फॉरेस्ट लखनऊ एंड महानदी रिवर इन उड़ीसा। सो आपके ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये क्रोकोडाइल्स को प्रोटेक्शन देने के लिए लॉन्च किए गए। The one-horned rhino is protected in Kaziranga National Park and Manas Wildlife Sanctuary in Assam and Joldapara National Park in West Bengal. The Dachigam National Park in Jammu and Kashmir is famous for Hangul Kashmiri stag. So these are some projects and places which are famous for some animals. Now we have check and mate. You can do it by yourself as we already read about these things. What we learn in this chapter, now we will discuss it in a nutshell. The environment has two components, abiotic and biotic. Both plants and animals are interdependent. Animals provide carbon dioxide, help in pollination, seed dispersal and in decomposition of dead plants and animal matter. Plants provide oxygen, food and shelter. A food chain starts with a producer and ends in a decomposer. A food web is formed due to interconnection of different food chains. It is important to maintain the balance in nature. Natural imbalance may be caused due to human-related activities such as deforestation, pollution, introduction of new species or overhunting of particular species. Natural causes for imbalance are volcanic eruptions, floods, forest fires, etc. Natural balance may be restored by measures such as afforestation, preventing pollution, and setting up protected areas such as national parks and wildlife sanctuaries. Here is some keywords. Existence, the state of living. Humus, the organic component of soil formed by the decomposition of leaves and other plant materials by soil microorganisms. Harmonious, friendly and peaceful. Ecosystem, the living and non-living things that interact in an environment. Predator, an animal that hunts, kills and eats other animals. Prey, an animal that is hunted by another animal for food. Sewage, waste water that flows through pipes or sewers. Thank you students. We will meet again in the next session.